और अभी आपको बता दें कि कराची में कम मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म हो गए हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। इस बारे में अभी आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। China International Import Expo. I especially want to thank the President, the Chinese government, for the great hospitality accorded to me and my delegation. As the Belt and Road Initiative gives shape to a global community of shared interests, this expo will help spread dividends of freer trade amongst more closely integrated economies. In Pakistan, the Karakoram Highway merges into a network of modern highways that are part of the China-Pakistan Economic Corridor. These take you to the deep sea port of Gwadar, the point where the belt and road converge, and this impacts not only Pakistan, but has an impact on all the economies of the entire region. CPEC shall cut distances and costs, bringing much needed resources to producers and new products to consumers. CPEC is a mechanism to forge even closer connectivity between the Middle East and China and between Central and South Asia. It is opening fresh investment avenues, new markets, new vistas. My party, the Tehreek-e-Insaf, or PTI, campaigned during the last election for change. And now, since we've been in power, we are initiating deep and meaningful reforms impacting all sectors and every aspect of governance. We are committed to improving our frameworks of transparency and accountability, leveraging technology for seamless, smart solutions for business and governance. We in Pakistan are blessed with an abundant array of resources ranging from minerals to fertile land to wealth of renewables and the most diverse landscape with 12 climatic zones. Our industry is already producing high-end textiles, sports goods, engineering goods, IT services, and medical technologies, including surgical instruments. But by far, our greatest and most promising resource is human. We have 100 million Pakistanis below the age of 35, a young, vibrant population. And the Naya or New Pakistan will be more conducive and more competitive place for transacting business. At a time when the international trade system is under attack, when unilateral commercial benefits are being sought aggressively by some, when protectionism is on the rise, we take great comfort in President Xi's courageous statement, and I quote, "The doors of China's opening up will never shut, but will only open ever wider." Thank you. इमरान खान इस वक्त नुमाइश से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह कर दें कि की नोट स्पीकर के तौर पर खिताब कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि सीपेक दरअसल नई मुआशी राहों को खोलने का एक अहम जरिया है। उनकी जानिब से चीन की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। कहा कि हमारा बेहद उम्दा अंदाज में खैर मकदम किया गया। ये भी कहा कि नुमाइश में मेरे लिए शिरकत यकीनी तौर पर एक एजाज़ की बात है। हमारा हुकूमत में आने का एजेंडा एक ही था, वो था पाकिस्तान में तब्दीली लाना। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा
ये सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी तब्दीली लेकर आएगा और हम पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड चाहते हैं कि तमाम तर मामलात इंसाफ के साथ हल हों और यकीनी तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो सी पैक के तमाम मंसूबों में मलहूज़ खातिर रखी जाएगी।